Hello dear children. Last video we discussed the three other principles of management. Now today we are going to discuss the next ones. The first for today is principle of scalar chain. Again another very important principle of management developed by Henry Fayol. हमने पढ़ चुके we have already studied about the levels of management. Top level, middle level, lower level, and according to the level the authority also it differs. At top level the authority is maximum, at lower level it is minimum. So if suppose in an organization any communication has to happen, कोई information कोई notice pass होनी है, so there should be a line of authority and a chain of command should be followed. कि suppose A जो है A has to give an information, so A should give it to B, B should give it to C, C should give it to D. This chain, this line should be followed, and this line of authority or chain of superior from top to lower level of management, this is what a scalar chain is. Scalar chain refers to the line of authority or chain of superior from top to lower. This chain, this line is what we call scalar chain. In case any information is being passed, anything is happening in the organization, it should happen in this order. इसका फ़ायदा क्या होगा? That there will be no communication gap. All the levels, all the the various parts of the organization will be well informed, and at the same time a line of hierarchy. This hierarchy will be followed. इससे इसको he knows that this is the boss, he knows that this is the boss, and he knows that this is the boss. He knows that there is only one boss. ऐसे ही everybody knows कि who's the superior, who's the subordinate. कौन boss है, कौन उसका subordinate है, ये relationship भी clear हो जाता है और काम करना आसान हो जाता है. Hence in an organization, if any communication has to pass, it has to go according to this line of authority or chain of command. This is scalar chain. But there is one other term that's called gangplank. Question may come, what do you mean by gangplank? At time of emergency, like suppose there is a fire in the organization और कोई बहुत ही unexpected सा uncertainty हो गया, so there you cannot follow, like if there is a fire, D will not say it to C, C will not say to B, and B will tell to A, and A will call the fire brigade or something. By that time there will be huge losses. वहाँ पे D को directly A को बताना है ताकि immediate action लिए जाएँ. ऐसे बहुत rare emergency cases में gang plank आता है. फेयल ने गैंग प्लान का कॉन्सेप्ट दिया है कि इन केस ऑफ इमरजेंसीज दिस लाइन ऑफ अथॉरिटी, दिस स्केलर चेन कैन बी ब्रोकन, एंड द टू वेरियस लेवल इन या तो डिफरेंट लेवल पे टू वेरियस लेवल्स कैन कम्युनिकेट. ऑल्सो मान लीजिए अगर ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ये सेल्स डिपार्टमेंट है, सो सेल्स प्रोडक्शन वाले आपस में कम्युनिकेट बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते. अगर मान लीजिए डी वाले को जी को कुछ बताना है, सेल्स डिपार्टमेंट के सुपरवाइज़र को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के सुपरवाइज़र को कुछ बताना है, तो डी सी को बताएगा, सी बी को बताएगा, फिर ए, फिर ये ऐसे जाएगा. इट विल गो लाइक दिस, इट कैन नेवर हैपन लाइक दिस. अंडरस्टूड? कभी ऐसे नहीं हो सकता है. सो इवन अगर दो प्रोडक्शन है तो वो प्रोडक्शन वाले अपने प्रोडक्शन वाले से ही बात करेंगे. अगर डी हैज़ टू गिव समथिंग टू जी, डी विल टेल टू हिज बॉस, दिस विल गो टू हिम, he will tell to the A, and then A यहाँ पे, and this is how the communication will pass. This direct communication cannot take place because of scalar chain, that is the line of authority has to be followed. But मान लीजिए अगर D के पास कोई बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है G के लिए और वो बहुत इमरजेंसी वाली है, सो D जो है तब डायरेक्ट कम्युनिकेशन क्रिएट कर सकता है, जिसे हम गैंग प्लैंक कहते हैं. सो व्हाट इज गैंग प्लैंक? इन केसेस ऑफ इमरजेंसीज डायरेक्ट कम्युनिकेशन कैन बी एस्टैब्लिश बिटवीन टू पोस्ट, बिटवीन द टॉप लेवल एंड द लोअर लेवल, लीविंग द मिडल वन. और दो अलग अलग डिपार्टमेंट के दो अलग अलग पोस्ट भी एक दूसरे से, ये इससे भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकता है. दिस कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट दिस, बट ओनली इन केस ऑफ इमरजेंसी, एंड दिस विल नॉट नोन एज स्केलर चेन, दिस विल बी नोन एज द गैंग प्लैंक. Okay, so what is scalar chain? It refers to the line of authority and chain of superior from the top to the lower level, which has to be followed in an organization for any work. This is how it will work. फ़ायदे क्या हैं? सिस्टमैटिक फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होता है और कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं होता. इस अगर आपने नहीं फॉलो किया, देन ऑफ कोर्स देयर विल बी लैक ऑफ कम्युनिकेशन एंड देयर विल बी chaos एंड कन्फ्यूजन इन द ऑर्गेनाइजेशन. द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर. ऑर्डर का मतलब आपको लग रहा होगा कमांड ना, ऑर्डर जज साहब, नो, इट्स नॉट दैट ऑर्डर. ऑर्डर हियर मीन्स द प्लेस. Henry Fayol says that whether it is man or material, whether it is a CEO or a screwdriver, everything in the organization should have a proper place.
एक अगर स्क्रू ड्राइवर हो तो वो एक पर्टिकुलर जगह पे वहाँ के टूल बॉक्स में रखा हो. इफ़ इट इज़ द मैनेजर, ही शुड हैव अ केबिन वेयर ही शुड सिट एंड वर्क. what will be the benefit of it? Everything in the organization, if it has a particular place और वो वहीं पे रहे, then there will be no wastage of time. Whenever they are required, they can be, they can be reached and approached at that particular place only. So in order to reduce, in order to remove any time wastage, everything and everyone in the organization should have a particular place, a fixed place where that person or that thing should be found. That is principle of order. That means order means the jagah, everything in the organization, man or material, they all should have their specific places. एंड द थर्ड वन, द थर्ड प्रिंसिपल फॉर टुडे इज प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी. इक्विटी का मतलब होता है इक्वालिटी. इक्वालिटी स्टैंड्स फॉर काइंड, फेयर एंड जस्ट ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़. इन द ऑर्गेनाइजेशन देयर शुडंट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द एम्प्लॉयज़ ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट, बिलीफ, नेशनैलिटी और एनी अदर बेसिस. No discrimination should be there. Whoever is working very hard, he should be rewarded accordingly without being discriminated. Everything should be based and judged on the basis of qualification, talent, hard work and performance, no other criteria. When there is equality in the organization, then only the customers, the employees are satisfied, their morale is high, they are motivated and they contribute towards maximum. लेकिन अगर किसी organization में looks पे, according to looks, according to gender, if there is discrimination, people will not be happy to work there and they will leave the job. Your turnover का मतलब होता है change. एक ही position पे बार बार अगर एम्प्लॉयज़ चेंज होते हैं तो उनको हम टर्नओवर कहते हैं. तो अगर इक्वालिटी है सो टर्नओवर नहीं होगा, पीपल विल हैप्पीली वर्क, देयर विल बी नो चेंज इन द एम्प्लॉयज़, नोबडी विल लीव योर ऑर्गेनाइजेशन. बट इफ देयर इज नो इक्वालिटी, दीज चेंजेस विल बिकम परमानेंट. Hence, there should be equality in the organization. So these three are the next principles. In the last video for this 14 principles, that's the next one, we will discuss the final 3 principles of videos and then we will be done with the 14 principles of management. Thank you children, happy learning.